Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वाई? बिकॉज वन वेरिएबल एक्स इज हियर और इस वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। इसकी जीरोज़ निकालने के लिए हमें पी एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। मीन्स 2x plus 3 is equal to 0. This means 2x is equal to minus 3 and that gives x is equal to minus 3 by 2. This minus 3 by 2 is the 0 or root or solution of the linear equation 2x plus 3 is equal to 0. Every polynomial equated to 0 becomes an equation. Now this minus 3 by 2 can be represented on a number line. This is minus 3 by 2. It should be somewhere here. Now this solution minus 3 by 2 is only one of its kind for a linear equation in one variable. It is called unique solution of a linear equation in one variable. So one variable में एक equation लिखने के लिए हमें number 1 variable, it could be x or y or z. नंबर 2 कोफिशिएंट, it could be a, b or c. नंबर 3 a constant, it could be c, d, etc. So linear equation in one variable is ax plus b is equal to 0. Here a is the coefficient of x and b is the constant. The condition is a should be non-zero, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वन वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा और ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं रहेगी। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लिखने के लिए हमें नंबर 1 टू वेरिएबल्स से x and y और u and v और r and s, हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 2 टू कोफिशिएंट्स a, b और वन कांस्टेंट say c, and we can write it as ax plus by plus c is equal to 0. There are two variables, each of degree 1, and condition here again is a not equal to 0, b not equal to 0, because if any one of them ceases to be there तो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में रह जाएगी, इसलिए ना तो a को 0 होना है ना b को 0 होना है। इसको स्पेसिफिकली लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x plus 3y plus 12 is equal to 0. इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब हम एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। टू फ्रेंड्स टुगेदर स्कोर ए टोटल ऑफ 136 रन्स इन ए मैच, नॉट नोइंग देयर इंडिविजुअल स्कोर्स। सो वी राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। लेट A score
x runs, b score, y runs. x और y दोनों अननोन क्वांटिटीज़ हैं और वेरिएबल हैं. इन दोनों की हेल्प से हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं टू वेरिएबल्स में. It is linear equation two variables because x and y both have their degrees as 1. We can also write it as x plus y minus 136 is equal to 0. And comparing it with standard form ax plus by plus c is equal to 0, we note that if we take the coefficient of x is equal to 1, then value of a is equal to 1. b is equal to again 1 because coefficient of y is 1 here, and c is equal to minus 136. We take another example, say y is equal to 2. How to write it in the standard form? We write as 0x plus 1y, taking 2 to the left side, minus 2 is equal to 0. Compare it with the standard form ax plus by plus c is equal to 0. Here a is 0, b is 1 and c is minus 2. अब इस लीनियर इक्वेशन को देखिए. इसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x और y की वैल्यू एज्यूम करते हैं. लेट अस टेक x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2. अब इन वैल्यूज को यहाँ रखने पर x की जगह 3 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं. We see that 6 plus 6 is equal to 12. 12 is equal to 12. That is left hand side is equal to right hand side. It means x is equal to 3, y is equal to 2, or 3 2 satisfies the equation 2x plus 3y is equal to 12. This 3 2 is an ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर किस लिए? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर x की वैल्यू आनी है और सेकंड प्लेस पर हमेशा y की वैल्यू आती है. अब एक मेथड और भी है. अगर हम ऐसे नहीं कर सकें, दूसरा मेथड ये है कि 2x plus 3y is equal to 12 में let us first put x is equal to 0. Take x is equal to 0. So 2 into 0 plus 3y, I am sorry, it is 12 here, is equal to 12. So 0 plus 3y is equal to 12 means 3y is equal to 12 और y is equal to 4. जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 4 आ गई. इसका मतलब 0 4 एक और ऑर्डर्ड पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. और अगर x की जगह हम y is equal to 0 ले लें तो क्या होगा? 2 into x 2x plus 3 into y यानी 0, that is equal to 12, और 2x plus 0 is equal to 12. That gives you 2x is equal to 12 or x is equal to 6. Means 6 0 is another pair which satisfies the given equation 2x plus 3y is equal to 12. So we have found 3 pairs, means 3 2, 0 4 and 6 0. There could be many more such pairs. Infinite number of pairs can be found out. We can represent all these results in a tabular form. X 3 y 2, x 0 y 4,
x6, y0, and many more pairs can be written which show that a linear equation in two variables has infinitely many solutions. Now we can represent this solution by graph. By plotting these points on a graph paper, we would get a graph of this type. This is our x-axis, origin, y-axis. First pair is 3, 2, means x3, y2. 1, 2, 3, y2. Next is 0, 4, x0, y4. This is x0, y4. इस सारी लाइन पर x की वैल्यू 0 है. 1, 2, 3, 4. So this point denotes 0, 4. We can join these 2 points and obtain a straight line. That the third point is 6, 0, as shown in the table. So this is the graph for 2x plus 3y is equal to 12. So this is how to plot the graph of a linear equation in two variables by making a table like this. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. Draw the graph of 2x plus y is equal to 6. Take x is equal to 0. 2 into 0 plus y is equal to 6. 0 plus y is equal to 6. That is y is equal to 6. Means 0, 6 is an ordered pair. Now take y is equal to 0. So 2x plus 0 is equal to 6. 2x is equal to 6. X is equal to 3. Means 3, 0 is also an ordered pair. Similarly, we can take x is equal to 2, y is equal to 2. We put 2 into 2 plus 2 is equal to 6. 4 plus 2 is equal to 6. 6 is equal to 6. This implies 2, 2 is also an ordered pair. So, what we do, 0, 6, 3, 0 and 2, 2. You can also draw the graph of it. We plot the points as coordinates 0, 6, x0, y6, x0, y6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This point is 0, 6. Here x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और y की वैल्यू 6 है. Another point is 3, 0. 1, 2, 3. X is 3 at this point and y is 0. If we join only these 2 points, we can draw a line which is the graph of 2x plus y is equal to 6. Now, given a point, we wish to find the equation of the line on which does it lie. For example, take the point 2, 3. We have to find out the equation of the line on which this point lies, or equation of the line which passes through this point. So what we do, this is the value of x, this is the value of y. We try to establish a function between these two. For example, x plus y can be written as 2 plus 3, that is equal to 5. This is one equation. Second, we have y is 1 more than x. 3 is 1 more than 2. This is another equation. Also, y is
3 by 2x. When you put x is equal to 2, they cancel out and y is equal to 3. This is another equation. Actually, there are a number of equations. To say correctly, infinite many lines which pass through this point 2, 3. Let us show it graphically. अब इस लाइन पॉइंट से देखिए कितने लाइंस पास होती हैं. 1, another line, one more line. So there are infinite numbers of lines which pass through this point 2, 3, or this point 2, 3 lies on infinite number of lines. अब हम लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं. 4 equations are given. Choose the one whose graph is given below. ये ग्राफ है और ये 4 लीनियर इक्वेशंस हैं. हमें ये बताना है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है. सो वी फाइंड one ordered pair from each. For example, in first, if we put x is equal to 1, y is equal to 1, so we get a pair 1, 1. Here, if we put x is equal to 1, y is equal to minus 1. Here, if we put x is equal to 1, y is 2. And if we put x is equal to 1 here, it becomes 7, 2 plus 3y. 3y is equal to 7 minus 2, 5. Y is equal to 5 by 3. यानी this means 1, 5 by 3. अब हम इस ग्राफ को देखते हैं. इनमें से कौन सा पॉइंट इस ग्राफ पर प्लॉटेड है. Clearly, this point is plotted here, 1 minus 1. So, this graph is of the line x plus y is equal to 0. Solve 2x plus 1 is equal to x minus 3 and represent its solution number 1 on the number line, second on Cartesian plane. So, we solve it for x. 2x plus 1 is equal to x minus 3. We transpose x to left hand side and number 1 to right hand side so that we may get 2x minus x is equal to minus 3 minus 1. That gives us x is equal to minus 4. To represent this number on number line, we draw the line x is equal to minus 4 is the solution of this linear equation on the number line. अब इस इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. One into x. There is no y here. This means y will be multiplied by 0. Taking minus 4 to left side, we get 4 is equal to 0. Now comparing this with standard form, which is ax plus by plus c is equal to 0, we find that a is equal to 1, b is equal to 0, and c is equal to 4. And to find the ordered pairs, we see that x is equal to minus 4. It is constant. बाकी y की वैल्यूज बदलनी है हमें. The pairs will be minus 4, minus 4, minus 4. You can put any value you like. 2, 3, 4. So these are the 3 ordered pairs. Now we can plot them.
-4 2, x की वैल्यू -4 है, दिस मीन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द O, 1 2 3 4. Actually this is -4 0, so -4 2 will be -4 same, 2 will be here, so that will be -4 2. Then -4 3, -4 4. By joining these 3 points, we get a line which is parallel to y-axis, and its name is x is equal to -4. So this is the graph of the x is equal to -4. Now another important problem, draw the graphs of x minus y is equal to 1 and 2x plus y is equal to 8. This is a pair of linear equations. We also call it system of linear equations. We have to find the solution of the pair of linear equations. What is the solution of these two equations? One pair which satisfies both. There is a common pair, ordered pair, which satisfies this equation and this equation both. That is the solution of the pair of linear equation. Second, shade the triangular region included between the lines and the y-axis. And third, find the area of the shaded region. So first we find the pairs of this. We make tables for each. X minus y is equal to 1. If we put x is equal to 0, y is equal to -1. This minus sign will go to other side. If y is equal to 0, x is equal to 1. So 0 minus 1 and 1 0 are two ordered pairs of the linear equation x minus y is equal to 1. Similarly, 2x plus y is equal to 8. If we put x is equal to 0, y is equal to 8. If we put y is equal to 0, 2x plus 0 is equal to 8, 2x is equal to 8, x is equal to 4. So the ordered pairs are 0 8, 4 0. अब हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके दो लाइंस लेंगे जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें इस पेयर की कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0 minus 1, x 0 y minus 1. x 0 is here, y minus 1 is this point. So this is 0 minus 1. Second point is 1 0. This is x is equal to 1, y is equal to 0. Now these 2 points, x 0 y 8. x 0 is on this line y axis. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this point is x 0 y 8. Another point 4 0, x 4 y 0. 1 2 3 4. So this point is 4 0. We shall join these points to get the two lines. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें ये दो लाइनें मिल गई हैं जो इन इक्वेशंस की ग्राफ है. ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और ये लाइन है x माइनस वाई. अब इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है. इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करेंगे हम? x की वैल्यू निकालने के लिए x1 x2, हियर इज x इज इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू 3 आई. y की वैल्यू निकालने के लिए y वाली एक्सिस पे देखेंगे y की वैल्यू 2 है, सो द कॉमन पॉइंट इज 3 2. 3 2 is the common solution of these two linear equations. Second point, shade the triangular region included between the lines and the y-axis.
अब ये हमारी वाई एक्सिस है और ये दोनों लाइंस हैं, तो इसके बीच का ट्रायंगुलर पोर्शन जो आ गया हमारे पास, उसको हम शेडेड पोर्शन बना लेंगे। इसे अगर हम ए कह दें और इसको बी, तो ट्रायंगल हमारी हो गई ए पी बी, सॉरी बी इज हियर, ट्रायंगल ए पी बी। अब हमें इसका एरिया निकालना है। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस ए बी है। ए बी की कितनी वैल्यू है? 8 पॉइंट्स तो यहाँ है, 0 to 8 और 1 इज देयर, मीन्स बेस इज 9 यूनिट लॉन्ग, सो हाफ इंटू 9। वंस अगेन 8 units from O to A and 1 unit from O to B, it makes 9 units. Height is this distance, which is 3, perpendicular distance. So this gives us half into 27, that is 13.5 square units. So the area of the shaded region, triangular region, is 13.5 square units. Now, a taxi charges rupees 8 for the first kilometer and rupees 5 for the subsequent kilometers. Taking the distance covered as x kilometers and the fare charged as rupees y, write a linear equation. So, rupees 8 is the fare for first kilometer and total kilometers are x. तो 1 किलोमीटर निकल जाने के बाद कितने किलोमीटर बचे? x माइनस 1। और इन किलोमीटर्स का रेट क्या है? सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स का रुपीज़ 5 पर किलोमीटर। तो क्या फेयर बना इसका? 5 इंटू एक्स माइनस 1। और पहले किलोमीटर का कितना था? रुपीज़ 8। इसका मतलब 8 प्लस 5 एक्स माइनस इंटू 5 एक्स माइनस 1 इक्वल टोटल फेयर। टोटल फेयर, बट टोटल फेयर इज गिवन एज y, सो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 एक्स माइनस 1। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, और ट्रांसपोजिंग y ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 माइनस y, और राइटिंग सिंपली 5x minus y plus 3 is equal to 0. It is same as writing 5x minus y plus 3 is equal to 0. So this is the linear equation in two variables representing this situation. Let's take another question. If x is equal to 1, y is equal to 2 is a solution of a square x plus ay is equal to 3. Find the values of a. Because x is equal to 1, y is equal to 2 is a solution of this. So 1, 2 must satisfy a square x plus ay, मीन्स अगर x और y की वैल्यू यहाँ रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। सो ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ए इंटू 2 इज इक्वल टू 3, और ए स्क्वेयर प्लस 2a इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज a स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 3। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो दैट इज a स्क्वेयर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, बिकॉज 3a माइनस a इज इक्वल टू 2a and 3 into minus 1 is equal to minus 3. Then making pairs, a common, a plus 3, minus 1 common, a plus 3, 0,
we get a plus 3 into a minus 1 is equal to 0. Now, product of two numbers is 0, then either of them must be 0 or both must be 0. This implies a plus 3 is equal to 0. That gives a is equal to minus 3, or a minus 1 is equal to 0. That gives a is equal to 1. So, a is equal to minus 3 and a is equal to 1 are the two solutions of the given equation ax square plus ay is equal to 3. So today we discussed linear equations in two variables. I hope you must have understood it. आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए. Thank you. Have a nice time.